Hello dear students, so today we will be taking the next topic in the lesson metals and non-metals, that is lesson 6 of ICSE chemistry class 7th. We have already finished about the differentiation between metals and non-metals and their physical properties, luster, conduction, electricity, malleability, ductility, etc. That means you have done the classification of elements as metals and non-metals, how to avoid corrosion of iron, what is galvanization, and now today in this video we will be discussing about uses of metals, non-metals and metalloids. So, as you all know, metals are very useful to us. They are used on the basis of their properties. So, let us see uses of some important metals, and first metal which we are taking is gold. Gold, as you know, is a shiny yellow colored precious substance, and it is admired for its beauty, for its scarcity. Scarcity means it is not available easily, very rare, and chemical stability, because it does not combine chemically or make compounds, or it gets corroded or it gets rusted. Nothing of this sort happens, and it retains its beauty and shine for a longer period of time, and that is why it is very durable substance, and it is highly malleable because it can be drawn into very thin sheet. As you must have seen on the sweets how we put silver foil, same way we put gold foil also on the sweets. So, this much thin gold foil can be made. It is a very good conductor of electricity, and because it is a very good conductor of electricity, it is used in the manufacture of devices, in computers, telephones, home appliances, etc. It is used to make ornaments and coins, and in dentistry to fill the teeth cavity in the form of alloy. Gold is mixed with some silver, and this alloy of gold and silver is filled in teeth cavities. Okay. So, this alloy is used to fill cavities, and pure gold is very soft, very soft. So, it and it cannot be turned into jewelry. So, to make jewelry it is mixed with copper, nickel, silver, etc., and this makes it harder and cheaper. Okay. So, 100% pure gold is 24 carat. If I say 24 carat, that means it is 100% pure gold, but in India 22 carat jewelry is used. 22 carat, and what does this 22 carat means? It means that 22 part of gold, that is pure gold, and 2 parts of silver or copper. 2 parts of silver or copper is mixed to make it 24 parts, and this is used for making jewelry. Then the next metal is silver. It is an off-white, lustrous means shiny, highly malleable and ductile, that means can be drawn into sheets and can be turned into wires, and also a best conductor of electricity. It is the best conductor of electricity, but it cannot be used in place of to conduct electricity in electrical wires, because it is costly, and the chemical reactivity is more than gold. Gold से ज़्यादा reactive होता है, इसीलिए आपने देखा है सिल्वर काला पड़ जाता है क्योंकि वो reactive होता है. So, where it is used in making jewelry, for filling in tooth cavity, as I told you in the last slide, it is mixed with gold to fill in the cavities, and it is used as a purifier of water, and it is also used in electroplating in photography as silver bromide and silver nitrate. These are the two compounds which are used in photography, and that is why silver, and because this is a silver compound, so silver is used in photography. And in electroplating, what is electroplating? Suppose you want to put a layer of silver on iron or brass, that you can do. So, it will have a shiny silver like finish. Then for making thin sheets which are there on the sweets, to cover sweet, that is to decorate sweet, and to increase immunity. It also increases immunity of human body, and that is why you must have seen कि च्यवनप्राश में
सोना और चांदी बोलते हैं ना, सोना है चांदी है, क्योंकि सोना चांदी जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है पाउडर फॉर्म में. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ मिक्सड इन दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेज. And then silver is not used in making electrical wires because it is costly, although it is the best conductor of electricity. सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट हम उसका वायर नहीं बना सकते, ये कॉस्टली है. मेटल इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव ऑल्सो एंड इट इज़ नोन to man since ancient times. And where it is used in making pipes, making tanks, cylinders, agricultural tools, nails, wire meshes, etc. It is used to make bridges, ship, machine parts and buildings. And steel and alloy. So when iron is mixed with some amount of chromium or nickel, then it makes alloy as steel, and this steel is used to make cutlery. Cutlery means wo jo churi, chaku, kaate, chammach and all, that is known as cutlery, whatever things you use to eat food, to cut food. And surgical instrument, जो surgery में use होते हैं जितने भी instrument वो बनते हैं stainless steel से. And what is stainless steel? It is the alloy of iron containing some nickel, some chromium, some carbon. Okay. Then comes use of copper. Copper is a reddish brown metal. It is a reddish brown metal, highly ductile and a very good conductor of heat and electricity, and that is why wires are made. Okay, because आप इसका ductile भी है, it is highly ductile. ductile है तो इसका मतलब इसका क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा, और वायर बन जाएगा तो साथ में इसको क्या होना चाहिए, it should conduct heat and electricity also. So both the properties are there, that is why it is used in making electrical wires, to make coils and cables, utensils and semi-precious ornaments. Then making coins and statues in the form of its alloy, bronze and brass. तो bronze और brass ऐसे alloys हैं जिसमें copper use होता है, और इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम coins बनाते हैं, statues बनाते हैं, and then it is also used in some electronic devices. Now this is the activity which will tell you that what is ductility, what do you mean when you say ductile, if anything is ductile or it has ductility. So let's see some metals like iron, copper, aluminium and lead, and which metals are available in form of wires from these. So the ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. और सबसे ज़्यादा ductile जो metal है वो gold है, and you will be surprised to know that 2 kilometer length of wire can be drawn from only 1 gram of gold. जो आपने अपने कानों में टॉप्स पहने हुए सबसे छोटे वाले वो भी 2 ग्राम के हैं, तो समझ लीजिए उसको भी 1 ग्राम, मतलब इतना छोटा पार्ट से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गोल्ड कितना ज़्यादा डक्टाइल है. दिस एक्टिविटी विल शो यू दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. When on a cold day, if you will touch a metal rod or and then you touch a wooden rod, so they will be different in touch. Metal rod will be very much colder than the wooden rod. In the open we have kept metal rod also and we have kept wooden rod also, but which is colder? Metal rod is colder because it's good conductor of heat and it will conduct heat from our body quickly. हमारी बॉडी से हीट कस के जल्दी से निकाल लेगा, कंडक्ट कर लेगा, और उसको हमें कैसा फील होगा, हमें कोल्ड फील होगा क्योंकि हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है. While wood being a bad conductor of heat does not conduct heat so quickly. Another metal which we will be talking about is aluminium. It is the most abundant metal. सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मेटल है, and it is the second most useful metal after iron. And what is the color? It is silvery white in color, and it is malleable also, it is ductile also, it is very good conductor of heat and electricity, and that is why it can be used as a substitute for copper to make electrical cables and wires, as it is cheaper. कॉपर से भी cheap है, तो अगर आपको cheap wires चाहिए तो aluminium के wires भी मिलते हैं. And it is used to make utensils, cans, furniture, window frames, etc. Then it is used for packaging food stuff. You must be having aluminium foil at your home. Wrappers of medicines and the form of aluminium foil used in home. As a paint to prevent rust in the form of powder foil on telephone poles. Now because aluminium is light in weight, very shiny, but it is soft. So how we can make it stronger?
we can make it stronger by mixing it with making alloys with copper and magnesium and manganese. So if I mix aluminium with copper and very little amount of magnesium and manganese, then a substance which is created is known as duralumin. So what is duralumin? Duralumin is the alloy of aluminium, copper and little magnesium and manganese. And where it is used? It is used to make the bodies of aircraft, automobiles means car and all, and machine parts, tools etc. एयरक्राफ्ट में जो भी हम मेटल यूज़ करना चाहिए हमें, वो कैसा होना चाहिए? वो लाइट होना चाहिए, थोड़ा शाइनी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो लाइट और शाइनी तो एल्यूमिनियम था ही, बट हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने उसमें ये चीज़ें डाल दी, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज. तो ड्यूरालुमीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो गई? सो ड्यूरालुमीन इज़ लाइट ऑल्सो, इट इज़ शाइनी ऑल्सो एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. तो तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गई. इसलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं? फिर इसको हम एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. देन अदर मेटल इज जिंक. इट इज़ अ ब्लूइश वाइट मेटल. इट इज़ नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल. ना ही इसकी शीट बना सकते हैं आप, ना ही इसका वायर ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज़ ब्रिटल. जैसे आप इसको हिट करेंगे इट विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. लेकिन तब भी बहुत यूज़फुल है. कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एज एन इलेक्ट्रोड मेटल. हमें जब इलेक्ट्रोड बनाने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी बस इतना समझ लीजिए कि बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो वो जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. और वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो जिंक के बनाए जाते हैं. ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ इनका अलॉय होता है, जिंक होता है उसमें. टू मेक ड्राई सेल, वॉट एवर batteries you have at home which you put in your remotes and all, that is dry cell and it contains zinc. It is also used to coat iron sheets through the process of galvanization, which you have already studied. What is galvanization in the last video if you remember, and which protects iron from rusting. The next metal which is we will be talking about is mercury. It is a silvery white liquid metal. It is the only liquid metal, okay. So silvery white liquid metal and it does not moisten glass. glass को गीला नहीं करती है. It expands और contracts even on little heating. इतनी heating पे भी expand कर जाती है कि अगर आपने मुंह में इसको रख लिया है ना, तो वो expand कर जाती है और ठंड में contract कर जाती है. और इसी जो इसकी property है, जरा सी temperature rise में expand और contract करना, इसी की वजह से इसको हम thermometer में use करते हैं as a thermometric liquid. The liquid which is filled inside thermometer is known as thermometric liquid. In barometers and other scientific apparatus, it is used to same way it is used to tell the temperature and in other scientific apparatus. Mercury is also used in dentistry to fill the cavities with silver and gold. अगर गोल्ड के साथ मिल गया तो गोल्ड अमेलगम और सिल्वर के साथ मिल गया तो सिल्वर अमेलगम. तो ये जो वर्ड है अमेलगम, इसका मतलब है मरकरी. तो अगर आपने किसी के आगे अमेलगम लगाया तो समझ लीजिए कि उसके साथ मरकरी मिक्स्ड है. तो सिल्वर अमेलगम मीन्स सिल्वर एंड मरकरी, गोल्ड अमेलगम मीन्स गोल्ड एंड मरकरी. सो एन अलॉय ऑफ मेटल विथ मरकरी इज कॉल्ड अमेलगम. क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अमेलगम, ओके, इस तरह से. देन टिन. नेक्स्ट इज टिन. इट इज अ सिल्वरी वाइट मेटल, हाईली मैलेबल बट नॉट डक्टाइल. क्वेश्चन बनता है नेम अ मेटल विच इज हाईली मैलेबल बट नॉट डक्टाइल. तो यू विल से टिन. मैलेबल है मतलब शीट्स बन जाएंगी लेकिन वायर नहीं बन पाएगा. इट डज नॉट रस्ट. रस्ट भी नहीं होता है. तो कहाँ पे यूज़ होता है? जो आपके फूड स्टफ रखने के लिए, ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए जो कैंस बनते हैं वो टिन के होते हैं. जो बाहर पैक्ड फूड आता है, कैंस आते हैं, जो आपने देखा होगा गुलाब जामुन या रसगुल्ले के जो कैंस होते हैं, उसमें भी अंदर टिन की कोटिंग होती है. यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेड ऑफ अदर मेटल्स. किसी और मेटल से बना हुआ है यूटेंसिल, लेकिन उसको हमने कवर, उसके ऊपर लेयर किसकी चढ़ा रखी है? टिन की. एंड देन tin coated iron sheets are used to make boxes and big containers because iron rusts but tin does not rust, so tin coating is used to prevent iron from rusting and big containers and boxes are made from this. Then next metal is magnesium. It is available in the form of ribbons. बहुत पतली पतली strips, जो बहुत पतली strips में आता है, मतलब circle करी हुई ribbon form होता है इसका. And it is used in fireworks because it burns with a white dazzling light. For making alloys called magnesium and duralumin. Duralumin में भी बताया मैंने आपको यूज़ होता है, और magnesium एक alloy है, उसको भी बनाने के लिए यूज़ होता है.
So, magnesium and duralumin are different because magnesium contains only aluminium plus magnesium, 95% aluminium and only 5% of magnesium, that is magnesium. So, in fireworks you see many colors, and all those colors are produced by metals when metals are burnt. So, magnesium, strontium and barium, these are the three metals which produces light. Let us see the color. Magnesium gives white light, brilliant white light, strontium gives crimson and barium gives green color light. Crimson is very strong red color, somewhat near to purple. Red, strong red but near to purple, that is crimson color. Magnesium is very vital for life. Very vital means very important for life. The green pigment chlorophyll which is present in the plants, and what is the function of chlorophyll? Traps the solar energy for photosynthesis. So, this green pigment chlorophyll which is present in plant is actually contains magnesium compounds. So, magnesium बहुत important है एक तरह से. Indirectly magnesium is preparing oxygen, and this chlorophyll captures the solar energy for photosynthesis. And who is actually doing that? Magnesium compound. Then comes lead. It is very heavy silvery grey metal, and it is used in for making storage batteries, जो आपके घर में batteries हैं, and then for making sanitary pipes, tips of bullets, tin roofs and fusible alloy. So, fusible alloy is solder, known as solder, which is mixture of 50% tin and 50% लेड. आपने देखा भी होगा कभी कभी अगर आप किसी मैकेनिक के शॉप पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वाली जो प्लेट होती है उस पर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, उनको हम सोल्डर बोलते हैं. एंड सोल्डर एक तरह का अलॉय है जिसको हम बोलते हैं 50% टिन और 50% लेड का अलॉय है, और वो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नोन एज नोबल मेटल्स बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट. इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. एंड दे आर अनअफेक्टेड बाय एयर. चाहे एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे उस पर एसिड डाल दीजिए आप, चाहे उस पर बेस डाल दीजिए, कोई कुछ भी उनके शाइन पे फ़र्क नहीं पड़ता है. इसीलिए गोल्ड और प्लैटिनम को नोबल मेटल्स कहा गया है. और इसीलिए आप कितने सालों तक गोल्ड को पहन के रखिए, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं आता, ना वो काला पड़ता है, ना उसकी शाइन कम होती है, बिकॉज इट इज़ अनअफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर. एंड दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड दे रिटेन देयर मेटालिक लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम. उनकी जो शाइन है वो बची रहती है बहुत लंबे टाइम तक. Last metal which we'll be talking about is platinum. It is lustrous and very precious. Same like gold, it is very precious and it does not react with other substances. It is an excellent catalyst. It is used as a catalyst, water catalyst, which speeds the reaction without undergoing any chemical change. It is also used in making electrodes and electrolytic cells, for making expensive ornaments and watches. It is used as a catalyst, and it is used in hydrogenation of unsaturated oil to prepare vanaspati ghee in the manufacture, and it is also used in the manufacture of acids. Then tungsten, symbol is W. It is shiny grey metal. In solid state at room temperature, it can withstand very high temperature. कितना भी टेम्परेचर आप इसको दे दें ये सॉलिड से चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में सबसे ज़्यादा है. तो इसका टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. So that is why it is highly resistant to temperature, and it is highly resistant to acids. It is used in making electrodes, in heating elements, in electric bulb as filaments. ये बहुत important use है इसका. In cathode ray tubes, in making heavy metal alloys used to make cutting tools, in mining industries, etc. So you can see here articles made up of metals. Gold is used to make gold biscuits, silver coins, copper wire. Lead is used to make these batteries. Cans are made out of tin. Thermometer contains mercury. Fireworks contain magnesium, and a very expensive watch contains platinum. So these are some uses of metals. Now let's start uses of some non-metals. First we will take oxygen. Oxygen एक ऐसा non-metal है जो कि हमारी life के लिए बहुत important है, because human beings and animals use oxygen for breathing and respiration. We cannot live without oxygen. In hospital, oxygen cylinders are available for serious patients. It has many industrial uses and it is important for combustion. कुछ भी जलेगा नहीं, burn नहीं करेगा अगर oxygen नहीं होगी, तो it helps in burning. Burning और combustion एक ही बात है. Then uses of nitrogen. It is used in food canning,
such as in packaging of potato chips and electrical bulbs. When you bring potato chips packet from shop, you must have seen some gases inside that packet, and packet is swollen. So that packet contains nitrogen. Why nitrogen? Because it does not react, and it is inactive gas, and that is why it is used in food canning. Then it is also used in electrical bulbs, the same reason, because it is inert, it does not chemically react. And it is also used in producing fertilizers like यूरिया. जितना भी फर्टिलाइजर्स है हमारे सब नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, तो उनको बनाने में हेल्प करती है. देन यूज़ ऑफ कार्बन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. हर चीज़ में कार्बन मिलेगा आपको, कोल में, ग्रेफाइट में, डायमंड में, इन तीनों में फ्री स्टेट में. जब कंबाइंड स्टेट में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन है. फूड कार्बन है, फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं. और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलती है. नाउ वन बाय वन वील सी कार्बन का हर फॉर्म में क्या यूज़ है. फर्स्ट वील सी इन द फॉर्म ऑफ कोल. कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, जिसको बर्न करने पे हीट एनर्जी निकलती है. इन होम एंड इंडस्ट्री many trains still run on coal, and it is used in pharmaceuticals. The companies which make medicines are known as pharmaceutical companies. So there it is used. In textile sectors, means where clothes are made, that textile sectors, and it is also a source of synthetic chemicals and textile. Form of carbon is graphite. It is a crystalline black lustrous substance. It is soft and slippery, and it makes the paper black. It marks the paper black, and it is that therefore it is used in making the leads of pencil. ये जो pencil की lead है, ये graphite है, carbon का एक form. In electrode material, in electrolytic cell, it is a good conductor of electricity. Non-metal होते हुए भी good conductor of electricity. Exception में याद किया था हमने graphite. As a solid lubricant, क्योंकि grease, जब जो grease होती है वो graphite की बनी होती है, तो वहाँ पे use होती है ये. For making heat resistant crucibles for keeping molten metals. इसका जो टेम्परेचर है इसको हीट करने का बहुत हाई है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट. तो अगर हम किसी मेटल को पिघला के किसी चीज़ में रखना चाहते हैं, तो अगर हम किसी और मेटल में रखेंगे तो वो तो पिघल जाएगा, तो उसको हम ग्रेफाइट के क्रूसिबल्स में रखते हैं. क्रूसिबल मीन्स द वेसल वेयर दीज मोल्टन मेटल्स आर केप्ट. सो वो मोल्टन मेटल का जो वेसल है जो इतनी हीट स्टैंड कर ले, वो किसका बना हुआ होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का. एंड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूक्लियर reactions. Next form of carbon is diamond. It is one of the crystalline form of carbon. It shines brilliantly, hardest naturally occurring substance, and it is used as a precious gem. जो pure diamonds है ज्वेलरी में यूज़ होता है, और जो impure diamonds है they are used for cutting and drilling, glass, cutting glass and grinding hard substances, and in drilling heads. जो ड्रिल करने में जो आगे हेड लगा होता है वो इम्प्योर डायमंड का होता है, क्योंकि कितना हार्ड होता है, किसी भी चीज़ को काट के वो नीचे पहुंच जाता है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज चारकोल. चारकोल जो है वो भी एक फॉर्म का एक तरह का कोल ही है, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ डी कलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री. तो शुगर आपने देखा है जो ऐसे वाइट वाइट से कलर की होती है, तो उसका जो ब्राउन कलर है उसको हटाने में चारकोल यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्योरीफाई वाटर, as it removes the color and smell if present in water. Now the next non-metal which we will be talking about is iodine, symbol I2. It is a dark grey color crystalline solid with a metallic luster. Although non-metal है, लेकिन इसके अंदर वो shine है, जो metallic shine होती है वो इसमें present है. It is insoluble in water but soluble in alcohol and potassium iodide solutions. It is used in a very small quantity in the form of iodized salt for healthy growth of the human body. Iodine deficiency can cause goiter, जो गले में नीचे फूल सा जाता है बड़ा सा, उसको goiter बोलते हैं. तो इसमें आयोडीन जो है सॉल्ट में मिलाई जाती है जिससे goiter ना हो, आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो. Then it is also used in photographic films in the form of potassium iodide. Iodide is iodine actually. It is also used in making tincture of iodine. अल्कोहल में आयोडीन मिला दो तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है, जो एक पेन रिलीवर एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. और आयोडेक्स में भी यूज़ किया जाता है. ये आयोडेक्स में भी आयोडीन होता है, इसलिए आयोडेक्स शाइनी सी होती है. एंड
आयोडेक्स का भी काम यही होता है, पेन रिलीवर, एंटीसेप्टिक की तरह. एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. So after iodine, now we have a non-metal, that is chlorine. The molecular formula is Cl2. It is greenish yellow gas. If you remember the color of the gas, it is greenish yellow in color, and it is pungent, suffocating smell. नाक में चुभने वाली, दम को घोटने वाली ऐसी स्मेल होती है क्लोरीन की. इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर. फेयरली मीन्स इन गुड अमाउंट कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, एंड इट फॉर्म्स अ पेल येलो solution. Chlorine water is pale yellow because what is chlorine water? Chlorine water is, and when chlorine dissolves in water, it gives a yellow solution of chlorine water. Otherwise, the gas is greenish yellow in color. Where it is used as a bleaching agent. Color को bleach कर देती है. For rough and hard fibers like jute and cotton. Also used as a disinfectant for sterilizing both drinking water and swimming pool water. In swimming pool water also, you must have seen chlorine is added, and that is why the typical smell of chlorine and is there, and it is put in drinking water to disinfect it, all the infection या कुछ viruses, bacteria को kill करने के लिए, germs को kill करने के लिए chlorine is added to water. And it is also used in the manufacture of chemicals like DDT and BSC. DDT is dichlorodiphenyl trichloroethane, and BHC is benzene hexachloride. And it is also used to create bleaching powder, which are used as insecticide, pesticide. Insect को मारने वाला insecticide, pests को मारने वाला pesticide, और disinfect करने वाला disinfectant, respectively. So these are the full form of DDT and BSC, which you will be learning: dichlorodiphenyl trichloroethane and benzene hexachloride. And it is also used, chlorine is also used to prepare acids like hydrochloric acid, HCl. HCl acid को create करता है chlorine. Another non-metal is hydrogen, and is used as a reducing agent. What is reducing agent and what is oxidizing agent? This you will study in higher classes. In class 8th, you will be studying about oxidation and reduction. Here you have to just learn the term reducing agent, and you should understand what is reducing agent. Reducing agent is the element or a compound that loses an electron. तो जो खुद इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. Then it is used for converting vegetable oils into वनस्पति घी. इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं hydrogenation of oil. And in hydrogenations of oil, the vegetables oil, for example, coconut oil or any other mustard oil is converted into vanaspati ghee. It is also used to make ammonia, which is used to prepare fertilizer. So hydrogen ammonia banata है और ammonia से fertilizers बनते हैं. Sulfur, it is used as a fungicide, fungus को kill करने के लिए. Insecticides, insect को kill करने के लिए use होता है. It is used in the manufacture of sulfuric acid, H2SO4. This is sulfuric acid. इसको create करता है sulfur. It is widely used in the manufacture of sulfur drugs used in antibiotics. जितने भी एंटीबायोटिक्स है उसमें सल्फर ड्रग्स होती हैं, तो सल्फर वहाँ पे यूज़ होता है. मैच बॉक्स इंडस्ट्री में आपने जो मैच बॉक्स का हेड देखा है ब्लैक कलर का, उसमें जो केमिकल होता है वो है फॉस्फरस सल्फाइड. सल्फर इज यूज्ड टू मेक दिस फॉस्फरस सल्फाइड विच बर्न्स व्हेन यू स्ट्राइक द हेड. It is used to vulcanize rubber. So what is vulcanization? It is a process when rubber latex, which is converted into hard rubber, and this hard rubber is used for various purposes. So here also sulfur is used. Then metalloids, as you all know, the elements which show some properties of metals and some properties of non-metals. They are known as metalloids. They all are solid. So no liquid metalloid, no gaseous metalloid, only solids. And what are the names? You should learn the names: silicon, boron, arsenic, antimony, germanium, tellurium and polonium. These are metalloids, and let's discuss their uses one by one. First is silicon. Silicon is one of the most useful metalloid available to mankind. It does not occur in free state in nature because it is available in sand. सैंड में, सैंड जो है वो कंपाउंड है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का. सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ये है सैंड में प्रेजेंट रहता है ये. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ऑक्सीजन फर्स्ट है सबसे ज़्यादा क्रस्ट में, और सेकेंड है हमारा सिलिकॉन. सैंड इज केमिकली नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन बनता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सैंड और व्हाट इज द नेम ऑफ सैंड, केमिकल नेम ऑफ सैंड. सो केमिकल नेम ऑफ सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिका. तो सिलिका मतलब सैंड SiO2,
और सिलिकॉन एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलके सैंड बनाता है. Highly pure silicon is used in making microchips for computer, transistors, solar cells, rectifiers and other solid state devices. They are used extensively in the electronic and present space age industry. तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, space age industries में भी यूज़ होता है. It is also used in the manufacture of waterproof material. जो आपका रेनकोट्स, अम्ब्रेलाज और बैग्स हैं वाटरप्रूफ, उसमें ये सिलिकॉन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिलिकॉन से बना है, और ये जो सिलिकॉन है ये बनाता है वाटरप्रूफ मटेरियल सिलिकॉन, और सिलिकॉन से बनते हैं हमारे बैग्स, अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर सब्सटेंस कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड which is the hardest compound prepared by man. Naturally occurring hardest substance is diamond, but man-made hardest substance is silicon carbide. It is used for various kind of grinding tools. In the form of sand, it is used to prepare concrete, bricks, cement. Sand is the principal ingredient of glass. जो glass है वो भी sand से बनता है. You can watch the videos which are available on YouTube how glass is created from sand. In the form of silicates, the compound silicates, silicon is used in enamel, pottery, etc. and for preserving eggs. It is also used to make electrical steel, that is silicon steel, which is alloy of iron in which magnetic properties are retained. ऐसा alloy iron का जिसमें iron magnetic properties को retain करता है उसका नाम है silicon steel, which is alloy of silicon and iron. Germanium, it is lustrous, hard and grayish white metalloid. It is chemically similar to tin and silicon. Germanium is used as a semiconductor. It is used as a transistor in many electronic applications, and it is used by mixing it with arsenic, gallium and antimony. Germanium is also used to form alloys and as a phosphor in fluorescent lamps. So phosphor is a substance which emits light when some energy is thrown on it. So germanium is used in fluorescent lamps also. Then another metalloid is antimony. It is lustrous grey metalloid. देखो lustrous है तो metal की properties हैं. Antimony is used in electrical industry to make semiconductor devices. It is alloyed with lead to improve its hardness and strength and is used in batteries. Printing presses में भी use होता है as a type metal. Antimony compounds are used to make paints, enamels, glass, pottery. At least 2 or 4 uses you must learn. Then let's understand what are inert gases. They are chemically inert. That means they will not react with any other element. They are non-metallic. Non-metal है ये inert gases. And they all are gases. इसीलिए so gases कहा गया क्योंकि जितने भी elements हैं इसमें सब gases हैं और 6 elements हैं इसमें. ठीक है. और जो एयर में दे आर फाउंड ओनली इन ट्रेसेस, बहुत कम अमाउंट में. हीलियम, नियॉन, इसी सीक्वेंस इनको याद कर लीजिए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन. एंड यूजेस लेट्स सी. हीलियम इज द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट. पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम. इट इज़ यूज टू फिलिंग अप वेदर ऑब्जर्वेशंस बलून्स. जो बलून्स ऊपर जाते हैं उसमें हीलियम गैस भरते हैं क्योंकि बहुत लाइट है तो आराम से ये ऊपर जाती है. हीलियम बैलून्स बोलते हैं उनको. देन आर्गन इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग इनटू इलेक्ट्रिकल बल्ब्स एज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू द हीटिंग एलिमेंट. चूँकि आर्गन यूज़ करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हीटिंग एलिमेंट में, लेकिन सेम वर्क इज़ डन बाय नाइट्रोजन ऑल्सो, तो नाइट्रोजन को भी यूज़ करते हैं. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ द बल्ब, बट कॉमनली नाइट्रोजन इज़ यूज बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल है नाइट्रोजन, जबकि आर्गन बहुत कम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, रेयर है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन. नियॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स एंड ट्यूब लाइट्स. इट एमिट्स कलर्ड लाइट व्हेन एन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू इट. तो जितने भी आप एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स देखते हैं जिसमें बहुत सारे कलरफुल लाइट्स जल रही होती हैं तो वो सब नियॉन लाइट्स हैं. देन रेडॉन इज़ द ओनली रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस. इसको लर्न करेंगे. नेम द ओनली रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, तो वो है आपकी रेडॉन. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं. विच इनर्ट गैस इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. सो यू विल राइट रेडॉन सिंबल Rn. जेनॉन एंड क्रिप्टन आर यूज इन फोटोग्राफी. तो दोनों का जो एप्लीकेशन है वो फोटोग्राफी में है. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन.
We have done all the uses and all, and you have to learn these uses. At least 2 uses you must learn for all the elements which we have studied.